serene valleys and majestic mountains of Himachal Pradesh are a treat for the senses. But the state, known for its vast natural wealth, is struggling with a growing problem: plastic pollution. Plastic has ostensibly taken over the region. Himachal Pradesh produces more than 13,000 tons of plastic waste annually, most of which finds its way to the growing landfills in the region. In 2022, the state government went on to impose a ban on the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of non-woven plastic, which are items made from non-biodegradable polypropylene. For Himachalis, the decision was a favourable one. They could now go back to many of their traditional resources like the ubiquitous plant called tor. पहले यही तो इस्तेमाल होता था, प्लास्टिक थी नहीं। अभी देखो हर एक चीज प्लास्टिक ही है, कोई भी चीज ले लो आप प्लास्टिक की मिलेगी। छाते बनते थे, फिर जैसे हम खेतों में पारे डालते थे पहले, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती थी। तो पहले छाते भी नहीं होती थी, पोड़ू बनाते थे पहले, जैसे हम देसी में पोड़ू बोलते हैं उनको, जैसे छाते की तरह होता था वो, दो बंदे उसके अंदर बैठे रहते थे। तो अब तो जो आगे की जनरल है उसको पता ही नहीं है इसके बारे में। Indigenous to the western Himalayas, Bauhinia vaheli or tor is a climber that grows in hill forests at altitudes between 2,000 and 4,000 feet. A multi-purpose plant, its seeds can be consumed, leaves turned into plates, its bark used as ropes, and stems used for basketry. Belonging to the district of Chamba, 42-year-old Babu Ram and his family are only too happy to have ditched plastic and gone back to using patals or tor leaf plants for serving food, just like his ancestors did. जब हम प्लास्टिक के पत्तल में खाते हैं, जब गर्म उसमें गर्म चीज कोई भी डालो, आप चावल डालो, उसमें कितनी स्मेल आती है। इन पत्तों को जब इनमें खाएंगे तो कुछ आत्मा खुश हो जाती है। For Babu Ram, as for most rural communities in Chamba, tor is more than just a creeper. Used in medicines, food, fiber and tanning, it is an essential source of income. Patal making fetches him 2 rupees for a plate. With this, he is able to earn up to 4,000 rupees during special occasions and up to 1,000 rupees every month in the dry season. While more than 70% of the population in Himachal Pradesh is directly dependent on agriculture, only about 15% of the geographical area is cultivable. Hundreds of families like Babu Ram's, as a result, need to rely on natural resources like the tor for livelihood. Due to geographical conditions, commercial farming is not as profitable as in plain. So the community living here, they are heavily dependent on the bioresources for their life-sustaining commodities. So they have a very close relation with the plants and the vegetation growing over here, and they are the source of income for them. So you can find here a wide range of medicinal and economically important plants which have commercial value also. Harvested mostly from the wild but also grown for consumption and spiritual purposes, the tor is versatile. It is in fact also found across other Indian states like Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Telangana, where leaf plate stitching is a common livelihood activity among tribal communities. ये जो आपका टॉर प्लांट है, इसका बॉटेनिकल नाम है फेनरा वाली और साइनोनिम्स है इसका बहुनिया बाली एज वेल एज बहुनिया रेसिमोजा। तो जैसे कि इसकी जो कंडीशंस हैं, इसकी लीव्स जो होती हैं वो थोड़े बड़े साइज़ की होती हैं, स्मूथ होती हैं, तो इसको यूज़ करते हैं पत्तल बनाने के लिए। और वैसे भी ये दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्लांट। मल्टीपर्पज़ मतलब कि अलॉन्ग विद फूड एंड फाइबर्स इट इज़ सोर्स ऑफ फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एट्सेट्रा।
The traditional practice of making patals is, however, laborious. One requires between 3 to 5 leaves to make one plate. It is the men who collect the leaves from the forest and the women who dry and stitch them together with very thin bamboo pins. But lately, the mechanization of patal making has opened a new door for locals, especially the women. In 2016, the Rotary Club of Mandi took up a project for mechanizing patal making in collaboration with a women's self-help group. All they had to make a start was a room and a steady source of electricity. Today, the community of 20 families easily earns about 4 lakh rupees a month. बिल्कुल उड़ीसा में ही होता है, बंगाल में होता है जो पत्ता है, और वहाँ भी हैदराबाद में भी इसकी मशीनें लगी हुई हैं। ये आपकी बात ठीक है कि और इसका थोड़ी सी मतलब क्वालिटी, इनको कई बार हम बोलते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव करें तो दुगने तिगने रेट की वजह से अमेजोन पे आप देखेंगे दुगने तिगने रेट पे ये जो प्लेट्स अवेलेबल हैं। और एक सबसे बड़ा फायदा इसको प्लेट बनाने में है कि जो पतले हैं वो 3 से 4 दिन उनकी लाइफ होती है, फिर वो उसमें फंगस लग जाता है। परंतु इसको प्रेस करने से, गर्म करने से पत्ता जो है वो बिल्कुल उसमें वो खत्म हो जाता है, वो चीजें खत्म हो जाती हैं, और वो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर 6 मंथ्स, 5 से 6 महीने तक इनको रखा जा सकता है। ये खराब नहीं होता, उसकी ग्रीन भी वैसा रहता है, शेप भी वैसी रहती है, परंतु और दूर दूर तक इसको पहुंचाया जा सकता है। For 35-year-old Padmavati, making patals is almost a genetic skill passed down from her ancestors. But mechanization has brought her a new share of benefits. जब से हमें मशीनें मिली है तब से हमें ज़्यादा फायदा हुआ है। बोलने का मतलब है देखने को भी अच्छी लगती है, तो जो कई फंक्शनों में लोग स्टैंडिंग प्रोग्राम करते हैं तो इसको खड़े होकर भी खा सकते हैं। बोलने का मतलब है ये इस पत्तल को जो है बैठ के ही खा सकते हैं, इसको जो है खड़े होकर भी, यानी कि होटलों में जो बुक करते हैं तो इसको जो है खड़े होकर भी खा सकते हैं, हाथ में लेकर इस पत्तल को। हाँ जी। Part of the self-help group, Padma is able to stitch about 1,000 patals a day. These sell for between 4 and 6 rupees a plate, double that of those stitched manually. The ban on single-use plastic has given these leaves a new lease of life. But Tor didn't always enjoy the prominence it does today. When the British ruled India, the plant happened to be one of the victims of silviculture, the practice of modifying forests